आइए अब हम बात करते हैं सॉल्युबलाइजेशन की। सॉल्युबलाइजेशन ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। स्टेप नंबर 8 से ऑनवर्ड जो है ये हमारे ऑप्शनल स्टेप्स हैं। अगर हमारे पास जो स्टेप नंबर 7 तक प्रोटीन एक्सट्रैक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं हुई, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर फॉर सॉल्युबलाइजेशन ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। अब इन फर्दर स्टेप्स में भी हमारे पास जो मेन एक्शंस परफॉर्म करने वाले हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन एंड देन सम इंक्यूबेशन पीरियड्स अंडर एसिडिक और बेसिक कंडीशंस। स्टेप नंबर 7 से जो हम एक लाइजेट लेके चल रहे हैं, वी आर गोइंग टू centrifuge that lysate again for 15 minutes at 4 degrees centigrade in a microfuge tube, and then we are going to suspend them in 100 microliter the pellet। यहाँ पे वही स्टेप है 15 मिनट की सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमारे पास सुपरनेटेंट है, फिर पैलेट है। वी आर गोइंग टू डिकेंट द सुपरनेटेंट एंड वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर विद द पैलेट, बिकॉज हमारी जो प्रोटीन्स हैं, फॉरेन प्रोटीन्स हैं, दे आर इन द पैलेट। सो वी आर इंक्लूजन बॉडीज हैं, दे आर इन द पैलेट। सो वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर फॉर solubilization of those inclusion bodies. For that purpose, we have two solubilization buffers prepared. So in the first step, we are going to suspend the pellet in 100 microliter of inclusion body solubilization buffer 1 containing PMSF. So this PMSF is added just before use of this buffer, so that it can perform its function in a better way. After this addition in this buffer, we need 1 hour incubation at room temperature, so that the components of this buffer can perform their function. Once this 1 hour incubation is over, then we are going to add solubilization buffer 2. The volume is going to be 9 volumes. पहले हमने 100 माइक्रोलीटर यूज़ किया, अब हम सॉल्युबलाइजेशन बफर का 900 माइक्रोलीटर यूज़ करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू गो थ्रू एन अदर इंक्यूबेशन टाइम और इंक्यूबेशन पीरियड, दैट इज़ 30 मिनट्स। अब इस 30 मिनट्स के टाइम पीरियड में वी हैव टू मॉनिटर द pH. वी हैव टू मेंटेन द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन around 10.7. Sometimes it happens that the pH is going to be changed, so we can use potassium hydroxide to maintain this pH around 10.7. This is, if required, we can use potassium hydroxide. Once the 30 minutes incubation is over, we don't need that alkaline condition. We are going to shift that alkaline condition towards the acidic condition, and for that purpose we are going to use 12 molar HCl, strong concentration, so as to bring the pH to 8, and at this acidic pH another incubation is required for 30 minutes. Why we are going to use 12 molar HCl? हम इसमें 1 मोलर यूज़ नहीं कर रहे, 2 मोलर यूज़ नहीं कर रहे, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों यूज़ कर रहे हैं? इतना स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करने का पर्पस ये होता है दैट द लेस वॉल्यूम ऑफ दैट एसिड इज गोइंग टू चेंज pH more, and our final volume of that particular solution is not going to be significantly affected. अगर हम less molarity का HCl यूज़ करेंगे, so there may be a chance कि हमारे 1 मिलीलीटर सोल्यूशन के लिए हमें 2 मिलीलीटर एसिड की ज़रूरत पेश आ जाए, that is going to disturb our total volume. After 30 minutes of incubation at pH 8, we are going to perform again the centrifugation for 15 minutes at 4 degrees centigrade in a microfuge tube, and decant the supernatant in a separate tube, and dissolve or resuspend the pellet in 1x SDS gel loading buffer. 100 microliter gel loading buffer is used to resuspend the pellet. So now we have two samples again. One is the supernatant, the second one is the resuspended pellet in gel loading buffer.
We are going to take 10 microliters from each tube. We are going to add in it the gel loading buffer, 2x gel loading buffer, and then we are going to observe the samples using 10% SDS page if the degree of solubilization is okay and acceptable, and which of the sample is having our required foreign protein.